बाद में we'll start our session, right? So let us all close your eyes. आंखें बंद कर लेते हैं. Eyes closed. Spine erected. Take a deep and long breath. एक लंबी और गहरी सांस लेते हैं और शरीर को ढीला छोड़ देते हैं. Take another long breath for ओमकार. Once again. Slowly and gradually, धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. So, welcome, sir. You can say something. Hi, yes, we are able to hear your voice. Yeah. So, last time, due to some technical error, we are not able to. It was our unfortunate. So, don't feel any guilty about it, sir. आपने मुझे message भी किया था, but it's okay. It's natural. ना? We can't do anything when there is some technical error. So now, Dr. Sathyanarayana Bhat is a MD in Ayurveda in Bangalore University. He is, I think, उन्होंने बहुत सारे बॉटनी के ऊपर भी काम किए हैं, आयुर्वेदा के ऊपर भी काम किए हैं, and he is also researchers and lots of activities on the plant-based medicine he has done. So आज I will not take too much time. I request Dr. Sathyanarayana Bhat ji to start with his presentation and his today's sessions. चिंतन में 2 मिनट. Yes. मैं परिचय दे रहा हूँ सत्यनारायण भाट साहब का. हम पूरी आरोग्य भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवा में 4 दिन का सेमिनार था, क्योंकि हमारे जो ये बुजुर्ग को नालंदा और वल्लभी विद्यापीठ उनको बचाना है. 150 किताबें लिखी है. हम जब गोवा में थे तो 2 बेटियों को लेकर आए थे और उसका उतना संस्कृत में बेटियों ने पूरा आयुर्वेदिक समझाया था. और आज भी इतनी बड़ी पोस्ट से निवृत्त होते हुए भी वो मैसूर में उनके गांव में रहते. मैं तो बार-बार वीडियो कॉल से उनको मिलता हूँ. तो हमने गोवा में पूरे राष्ट्र की वहाँ बड़ा सेमिनार भी था, मेडिसिनल प्रदर्शन भी था. तो हमको पूरा समझना है. और तीसरा, हम सत्यनारायण भाट साहब को हमारे ऋषि परिवार में लाइफ टाइम के लिए रख रहे हैं रचनात्मक अभिगम से, और बहुत कुछ लेना है. और साहब को मैं विनती करता हूँ कि कोकम और आपका कायाकल्प चूर्ण उनके बारे में भी बताना. और 10-15 मिनट आप बढ़ जाए तो कोई टेंशन नहीं, हम लाभ ले लेंगे पूरा. एक पीरियड ज्यादा होंगे तो मैं पूरे ऋषि कृषि परिवार की ओर से सत्यनारायण भाट साहब को पूरे आवकार के साथ आमंत्रण देता हूं. और क्योंकि हमारी ये वल्लभी विद्यापीठ है, नालंदा विद्यापीठ है, उनको संवारना है, ये हमारी फर्ज है. और ये पूरे परिवार की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं. जय हिंद, जय भारत. नमस्कार किशोर भैया. ओम धन्वंतरे नमः. आज की इस अवसर पे आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू interact with my senior colleagues as well as my junior colleagues who are into the natural medicine. Today, in fact, incidentally and very interestingly, we are celebrating World
Health Heart Health Day. World Heart Day. Incidentally, 10 years ago, exactly 10 years ago, there was one newspaper in the local Mysore. It is called Star of Mysore. Continuously, it was Dasara days, and I wrote an article on 10 important medicinal plants which are to be used for the heart health, and they culminated with the 29th of September. I still remember 10 years ago. So it was the last day of the Dasara. The Shami Puja took place on that day. Again, today is 29th of September. I'm fortunate to address a big gathering across the globe. I'll start my presentation. Yeah, Bhumata, the Prithvi, we call it as Prithvi Gandhavati. So Prithvi is an element which can remember anything of the past. Prithvi has got tremendous memory. भूतकाल का पूरा गर्भीकृत है पृथ्वी. और सूर्य देव आप जानते हैं, he is the creator of the भविष्यत काल. भविष्य में क्या होना वो सूर्य देव निर्णय करता है. Then who should create the presence? वर्तमान काल कौन निभाना है? हम लोग खुद वर्तमान काल को निभाना है. It may be the भूमि or it may be the deha. So Ayurveda calls it as deha desha, bhumi desha. So we have lot of similarities between these two entities. Ayurveda clearly says bhumi desha, deha desha. If the bhumi desha is fine, deha desha can also be fine. Whatever seen in the external world is also seen inside the human body. With this small introduction, I am coming into the World Heart Day. Ayurveda gave a fantastic anatomical and physiological functioning, normal functioning, as well as abnormal functioning, as well as disease entities of the heart. Sushruta happens to be the great disciple of the great sage Dhanvantari. The first disciple of Sushruta, of Dhanvantari is Sushruta. You know pretty well. He gives the beautiful narration of the heart. Pundarikena sadrisham hridayam sya adhomukham. So beneath the sternum, inside the in between the lung cavities, it is situated in the urosthana, and Ayurveda believes there are two hridayas. One is Shiro Hridaya and second is Uro Hridaya. So how to keep these two hearts connected at the same time, two hearts in good health, and also to keep ourselves fit and fine. Our day begins with the screaming child born in this planet, and the last breath is breathed out when we leave this we leave this earth to the eternal abode. So the lifespan in between the first breath to last breath happens to be the Ayush. So we have to, as I told you, so Vartaman निभाना हमारा फर्ज है. कैसा निभाना है? So we have Balya, we have Tarunya, we have Grihasthashrama, and also the last one is
Vanaprastha Ashrama, and then again becoming the Muni Vritti. So all these stages are the major texts like Upanishads. They spell the individual duties in each and every step of the person. So coming to my present location, I'm located in a small village which is amidst the Western Ghats. So we call this particular area of 12.5 acres, about 5 hectares, in the name of Tribhuvan. So it was the earlier name given by our past owner of the land, and he passed it on to me just about 48 months ago. I'm enjoying this nature. In short, we call this as Barf ke bina Himalaya. The same vegetation which is found in the Haridwar Rishikesh or maybe in the Tripura, Agartala area is also found here, but many Himalayan species are not found here. So, but what are the plants endemic to this area? How we can optimize the availability of these herbs, and again the conservation of these herbs for the future generations. So that is my primary agenda after coming over to this village, after my long tenure of service in Ayush Department of Karnataka. And now let me take you to my garden. Yeah, here you see the beautiful tree, the Kadamba. In fact, I'm very fortunate to quote my experience. Maybe a few months ago, I was in the area of Bihar as well as Uttar Pradesh. So in the entire stretches of Naimisharanya, I could see the roadside avenue trees of Kadamba. Here you see the tall tree Kadamba, which is just 40 months ago. It was planted. It has grown up to the height of 40 feet. Imagine, we call it as the totipotency, the divisional cell division capacity of this particular tree. I was telling the experience in Uttar Pradesh as well as Bihar area. The trees were in abundant, particularly it is cultivated. All these trees have grown up. The central India, Bana Bhatta, the great poet of Esther era, he called a heroine of his work called Kadambari with the name of this Kadamba tree. Maybe the nomadic people of the post-Ramayana era might have used this tree as one of the important tools to maintain the health of the land and health of an individual. So Kadamba tree grows gigantically, and in one particular tree, I could not count the number of ants. We have a beautiful ant hill beneath the tree area also, and upper both Chitya, a big nest of ants. So this is the divine abode where in Ayurveda we even say that Atmavat Satatam Pashet Api Kita Pipilikan. So every creature in the world is equal to us. We have to find the soul, inner soul, Atma in the each and every insect, and we could see the Atmas of crores of ants in this one particular tree. Fortunately, this year it started flowering and fruiting. There is a beautiful saying in Sanskrit literature called Kadamba Pushpanyaya. Our writers were confused whether it is a
Kadamba Pushpa or Phala, because it has a similar Rachana, or the anatomically, it is neither a fruit nor a flower. So coming to the next slide, this can be cultivated across the country, and the main use, Ayurveda calls this as Vedana Sthapaka, as a pain reliever. The pain may be anywhere in the body, and it can be alleviated with the help of a decoction made out of the bark or made out of the leaves. Particularly, I mentioned the Kadambari might have been a wine prepared out of the fruit of Kadamba. It is still a potential crop which can be explored for the particular use of winery. Coming to the next plant, here is a small demo area where I am attempting to cultivate Dashamula Vrikshas and Dashamula Vrati Kantakari herbs. So these are the 10 plants which is extensively used in Ayurveda for major Vata disorders, including the postnatal care of the woman after delivery. Particularly, we are requesting the mother, the feeding mother, particularly from the 10th day onwards, the decoction, the fermented decoction of the Dashamula is inevitable. We are really celebrating the health day of the heart. Morning, I was looking at a great scholar's video. The video title is Hridaya Prabodhana. His name is Dr. Deepak Vasisht from Jammu. He was quoting a plant from Dashamula. It is called Sthira or Prishniparni, Shalaparni. These Shalaparni and Prishniparni are an excellent heart protective drug. He was analyzing point by point. Why I am quoting is Dashamula Arishta happens to be the drug of choice in the woman after the delivery. Mother is lactating and mother is feeding the baby. Through the breast milk, the child's health, child's immunity is increased. So this is the very rarest practice. Nowhere in the world this type of practice is undertaken. I am very proud of Ayurveda because we can prevent the diseases of the child, newborn child, with these Dashamula herbs. So this particular demo plot, we have to multiply it in thousands so that all these plants are endemic to Western Ghats. Particularly, you see the white leaf of Melena arborea, or we call it as Kashmaria, and then the other area you find Oroxylum indicum. Again, a Western Ghat, typical Western Ghat tree. Agnimantha, we have 2-3 species of Agnimantha. Bilwa is also cultivated in these tubes. Why tubes? Because we have to use the moola. So it is very easy to remove the moola, and then again the taproot can be allowed for 6 inches, and again it can be planted. So if it is in 1,000 tubes, we can definitely harvest around 1,000 plants, plant roots. So with that, today's, in fact, the need of the raw materials is increasing by anything. So you see ton loads of Dashamula plant materials are required each and every company, drug manufacturing companies. So like that, we have Shatavari twining to the another tree of Kadamba nearby. So Shatavari happens to be, the other day, our friend from New Delhi, Arogya Bharati ka Mahashaya Deepak ji batate the, the Shatavari is the drug of choice in anemia. I was just mentioning the lactation, and the lactating mother needs
the Shatavari tubers, and maybe in the future we may need it in shiploads. So where to get it? If you are generating the forest well, future becomes very, very bleak. So that's why the cultivation of Shatavari happens to be the very in thing, which is endemic to these Western Ghats, not only in India, in the entire Western Ghat belt, it is also available in everywhere in the Jammu Kashmir area to Kanyakumari. Used part is the tubers, mainly not only in the lactating mothers, it can also be, because I am also rearing about 5 cows in my custody, the local varieties of Malnad Gidda, we call it as a dwarf variety of cows. So they also need this type of lactating and purest lactation. So whatever doshas are present in the Tanya milk, breast milk, is elevated, is purified, is enriched with this sapogenic steroids present in this particular tuber of hair-like plant. This is the aerial part. So coming to the another Dashamula plant, this is one of the Brihati source, Solanum species. Particularly, we use the whole plant and sometimes the root. This is a common plant in our Tribhuwana area. We have to conserve it, and these are the fruits. It's just like the brinjal, from the same family, the eggfruit family. So this is the important plant found in our Western Ghats. You might have heard a name called Palghat. Palghat happens to be the border area of Kerala and Tamil Nadu. So earlier it was called as Palaikkad. Pale happens to be the local name, vernacular name, both in Tamil as well as in Malayalam, Palemara, and also in Tulu, my mother tongue, the coastal belt, this is known as Palemara. In our capital of India, New Delhi, all the embassies are situated in Connaught area. If I'm right, it is Connaught Place. So there, because of the department's venture, you could see the grown-up trees of Alstonia scholaris. Alstonia scholaris is the botanical name, one of the important anti-malarial drug used in the era of Charaka Sushruta. Also the Bhavaprakash Nigantu also called this as the best drug of choice in skin diseases as well as Jwara. So the Corona era, you may be wondering, the Western medicine didn't have any choice. They started using everything. I don't want to name the medicines, but they also started using anti-malarial drug. I'm fortunate to share this single experience. The lockdowns and non-connectivity to people made the very miserable era of Corona time. I just asked my fellow colleagues to start the bark decoction. Using the bark decoction, we could really treat so many Corona positive cases with zero intervention of allopathic drug. So this is the very proud declaration from my side, because I lived in this village and I cured so many Corona positive cases with the help of this Alstonia scholaris or Saptaparna. So coming to the another plant, important plant used in Ayurveda, in the management of heart diseases, both prevention and cure. This is one of the important fruit. We call it as Madhifal in Sanskrit, and Citrus medica. The botanical name is Citrus medica, the long line, very long line. Yeah, this is the important plant for the prevention of heart diseases, coronary artery diseases.
So it is just up 25 months old now. So another plant of the same. And here you find Vijayasar. Vijayasar is the Sanskrit name. Ayurveda calls this as asana, drug of choice in the management of prevention and management of diabetes. Mainly the bark is used part, bark decoction is also used part. It also gives a gummy exudate which is applied over the scalp, and this was used as the tribal people, they use it in the form of oil. Ayurveda advocates application of oil, particularly shiras and ears and pada. Shira, Shravana and pada. So all the three seeds you are supposed to anoint oil to keep the health intact. So tribal people are using the exudate of this particular tree. It is hardly about 18 to 20 months grown up tree, and it will grow to very large heights and beautiful flowering, just like tiger's color. We will find the entire tree is full of tiger colored flowers, and it is hosting scores of honeybees, and that's why they call this as one of the Vastu tree in the not only near the houses but also Kadamba and Haritaki or Harada and Asana or Vijayasar happens to be the Vastu tree of the land. Here you find Ayurveda believes in prevention of the heart disease. इसका नाम है Karonda. In fact, I was astonishing the word Karonda around the Banaras Hindu University. There is a small place called Karonda. I was wondering, then we can definitely relate Banaras Hindu University. The campus must have been a big forest. Later on, all these buildings started erupting, and this particular Karonda name further is available in the minds of the people, but the trees have vanished. Karonda, Carissa carandus, happens to be one of the prime choice to prevent heart diseases. So it is yet to flower. It takes some time. How to use? The unripened or half-ripened fruit in the form of pickles. They never knew that salt may be the preservative, and the fruits are stored in salt and then taken along with the very little salt or with mirchi. Kyunki Ayurveda also believes Shadrasopeta ahara. So there should be Shadrasas in the ahara. Lavana rasa is also important. Katu rasa, mirchi, gol mirchi or mirchi. दोनों भी चाहिए क्योंकि to keep the particularly the anticoagulant effect of lal mirchi is very important, particularly in the management of the coronary artery diseases. Karonda happens to be amla rasa pradhana dravya. Charaka, called one of the prime drug among the 10 drugs given as a Hridya Dravya. Karonda is also one among them. So here you see the Rakta Chandan, red sandal sapling, just it is of the ground level only. It took such a long time. Western Ghats are not that suitable abode of this Rakta Chandan, but Eastern Ghats, maybe Tirupati belt, maybe up to the Bangla belt, Tripura, and even up to the areas of Hardwar, Rishikesh,
Rakta Chandan trees might have thrived very well. Now it is slowly Nagarjuna Konda and Srisailam happens to be one of the best abode of and Tirupati are the best abode of this and motherland of this Rakta Chandan. We need in ship loads, not in trans. This is one of the available plant resource of Western Ghats. This is Bilva Agnimanta Shonaka Patala. So Padari or Patala Vriksha. So there are two patalas, Stereospermum suellens and Stereospermum chelinoides. This particular plant is Stereospermum chelinoides. The very interesting story I remind, the very word Patalipura, present Patna, the capital of Bihar, has derived from the trees of the abundant trees of Stereospermum suellens. Even 15 years ago, I went to the Bodh Gaya area and also to the other parts of Rajgir, Rajagriha, nearby Patna. Then I saw the abundance. Even this time also I located few trees, but not to the abundance of 15, 20 years ago. So why I am quoting is, this Patalipura became the capital of Magadha Empire. The name has derived from the tree, Stereospermum suellens. The Ganges water, which is just besides the Patna town, of course now it's a huge capital of Bihar, huge city. You see the very wide flow of Ganges, river Ganges. The water was muddy during the rainy season. They were using the flowers inside the store water and then put flowers, and then the water becomes pure. Beautiful narration of purifying available to us. Listen, where Magadha, where the Kautilya or Chanakya walk to, Sir, your voice is breaking. Hello, Sathyanarayana sir. Your voice is breaking. I think he has logged out. I think he might have joined once again. Yes. Sir, you can start saying yes, sir. Yes. Yeah. Yes, now you can share your PPT. Yes. Sir, you can do one thing. You can stop your video. You can close your video and you can start your PPT. Yes, sir. Yes, you can speak now, sir.
Hello, sir. Are you able to hear us? So yeah, I was explaining about the heart protective plan. Yeah, ચિંતનભાઈ એવું લાગે તો સીધો વિડીયો કોલ કરવાનું કહો ને સાહેબ ને તમને અને સીધું ડિસ્પ્લે માં લઈ લો. Okay. अभी सुन रहे हैं? ખબર રીતે પ્રોબ્લેમ છે, વિડીયો કોલ માં સારું આવી જશે. સીધું અભી- તમારી જોઈન કરી. Yeah, is it audible? Yes, yes, sir. Yeah, this is one of the important fruit, heart protective fruit. Yes. इंस्टेड ऑफ इमली इसका इस्तेमाल करते हैं. आपका गुजरात में इसको बहुत सारा इस्तेमाल हो रहा है. हमारे इधर यहाँ से या वी कॉल इट एज लकुचा फल. Okay, okay. So it's a Artocarpus lacucha. Instead of imli, instead of tomatoes, people used this and they prevented all sorts of atherosclerosis, arterial problems, and whatnot. It's one of the best Amla Rasa Dravya described in Charak Samhita. And yeah, here you see the plants of Nagakeshar. The real Nagakeshar is this. Used in the problems of women. And coming to last one or two slides, so yeah, Kush and Lava happens to be the two heroes of Ramayana. Lava happens to be the name of the bird, and Kusha happens to be the grass. We Yes. call, yeah. So this grass blade is one of the fantastic remedy for all biological problems, including flooding, including bioremediation for the, if the sand is not able to cultivate anything, you start cultivating this kusha grass, and then it can be converted as a best nutrient soil. So similarly, for the bioremediation means wherever the sewage water is going and you see the waste plastic and other things, there also we can use it as one of the best restoration of the land as well as water. So this type of grass is the need of the hour. So coming to the discussions, some more discussions. I have presented more than 30 minutes this particular video. Now coming to oral discussions. Sir, there is one request. Last few 2-3 slides, if you can repeat once again, because your voice was not clear. So it will be grateful. It will be great help for us. Before this, sir, there was नाकेसर के पहले और पीछे जाइए सर. There were उसके भी पीछे 2-3 slides. Your voice were breaking. Now इसके भी आगे और आगे सर. Once more. These slides I skipped it actually. Yes. These are the Garcinias. Okay. Important spice of the South India. Again, heart protective. Mainly the acidic taste of these acids are not only assimilating the bioavailability of the digestion, our nutrients, but also prevents cholesterol, and it makes all these fat is converted into energy. So these are the
important tool in our hand to prevent atherosclerosis or dumping of the unwanted cholesterol, what they say. Ayurveda never believes this cholesterol theory at all. So this is the, for even our non-vegetarian people, they use the fruits of this type of tree in the form of spice. Whenever they cook, they add this kokum and other important fruits. So these fruits will assimilate and digest the fat and make it bioavailable to the individual who uses the non-veg food. So coming to, this is again another plant. In fact, Indian gaur, not bison, we call it as Indian gaur. They graze into our lands because we are amidst the Western Ghat biosphere area. So it was very sour in taste. The leaves were very sour in taste, and these bisons, I mean Indian gaur, were straying into the garden and they were grazing this entire plant. Now it's growing beyond the reach, but still my friends are telling they may come, they may stump the entire plant and then they uproot it and eat it, because the sour taste of the plant is very good nutrient for the wild animals, including our reared cows. So this is the tree of lakucha, the fruit of lakucha, which I was referring. I am using Kishore Bhaiya, body health and heart health is improved. Not only that, body को हल्का बनाना है तो इसका काढ़ा पीने का. It was a rare discovery during the Corona era. I was making the powder of this and giving it as immunity improving decoction. People loved it because it was very beautifully tasting, and then they found that their body weight is also decreasing. So not only as an important spice to make the food sour, but also it can be used as one of the health promoter and weight reduction agent. So Nagakeshar ka bare can someone let us know about the name of that fruit in Hindi or Gujarati something? Kishore bhai, वो जो फ्रूट अभी दिखाया था उसका गुजराती नेम आप बताएंगे क्या? कुछ? हाँ, बिजोरा. अच्छा, बिजोरा है. ओके, फाइन फाइन फाइन. आई एम यूजिंग बिजोरा, बट ये बिजोरा नहीं है. अच्छा, तो ये लकुच फल है. लकुच, ओके. बिजोरा इज बीजपुरा, मातुलंगा. ओके ओके, ये मातुलंग नहीं है. अच्छा, या यू कैन गूगल इट आउट, आर्टोकार्पस लकुचा. ओके, भेजा है मुझे. आर्टोकार्पस लकुचा सीड्स आपको भेजा हूं. So I think Bhavana, Sampath ji, you can note it down and please let us know. And Sunita ji, आप भी note down कर लीजिए and please let us know. छोटा सा homework है ना, please. Yeah. नागकेशर का बारे में मैं दो चीज बताऊंगा. So you name the problem of the girl who attained the age of puberty and to the age of menopause. Any problem of the gynecological origin can be solved with a single plant. We use the flower of this, we call it as Nagakeshar. So the plants are very, very less in number now. Wild collection was very, very heavy in the past decades, and because of that, fruits could not be set. Because of that, seeds could not be set, and next generation plants could not germinate in the wild area. So we need Nagakeshar to save the uterus of our own sisters of the future. So this is one of the adult trend. This particular plant is not Indian origin. So Caurophyta guyanensis, the name itself is called, name gives the indication of
French Guyana origin, but the plant is widely accepted as Nagakeshar, but it is not a substitute. So I was coming to the particular slide where I was insisting on the use of Kusha grass. Among the 5 grasses, Kusha or Khas grass. The very name Khas has derived from the Sanskrit word Kusha. Vetiveria zizinoides. Vetiver grass can be wonderful solution for all our landslide, soil erosion, flooding, salt water, and pollutant in the water. All such things could be alleviated with a single grass. You name the disease, you name the problem of the ecological upset, it can be addressed with the help of this 1 meter above the soil, and it can reach 5 meters below the soil. We call this as the living nail of the nature. So we have to optimize the use of this particular grass. World Bank is insisting for finding as one of the universal remedy for ecological problems. But it is made in India, but India is not exploring it. I have seen in the coast of Australia where this particular grass is cultivated. Even in the landslide areas, it is cultivated. In Kerala, I could see the examples, particularly in the tea estates, to prevent the soil erosion. And again, sewage water purification can be achieved using the Khas grass. Wonderful utilization of this particular grass. We need it in bulk. So coming to some other question and answer, shall we start? Yes. Sir, that you told that Kusa grass is a vetiver. Is it so? All the biological problems. Okay. You name the problem of the soil, it can be definitely alleviated. So Darbha is a different than the Kusa, right? Darbha, this one, this. ये कुछ अलग है. Is it Kusha? This is the Desmostachya. Okay. But in this particular Khas grass, the roots are fragrant, very fragrant. Okay. Roots are fragrant. Okay. That's why it's called Khas बोलते हैं, खुश बोलते हैं. Okay. Fine, sir. So I request Nagesh ji to come and ask one question. And in the meantime, I would like to share, the बाद में अभी 2 मिनट के बाद में मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ नाग केसर, flowering of the Nag Kesar. You can see it is a very wonderful, since Sathyanarayana sir has told that it is a very rare, and so he will be even happy to see the flowering plants of this Nag We have Kesar. it in our village. We have it. But thing is, in the wild we have lost it. Yes. Sir, generally what is happening, मैं हिंदी में बताऊंगा कि ये crafted variety होती है, and because of the crafted variety, suppose जो crafting जहां से किया है वो जमीन के नीचे रहेगा, तो क्या होता है, जब ह्यूमिडिटी और गर्म पानी का यानी कि गर्मी वाला वातावरण होता है, तो जब रात को पानी डालते हो तो वो भाप ऊपर आती है, तो वहां पर वो फंगस लग जाती है. तो इसको बहुत थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है ये पौधे को. नाग केसर इज वेरी सेंसिटिव प्लांट. वैसे तो वो हार्डी वैरायटी है, बट टू टेक केयर इज अ लिटिल बिट ट्रिकी. So I will show you how we have developed it. In the meantime, question answer can be started. If anyone is having a question, then they can raise the hand. कुछ पूछना है सुनीता जी, भावना जी? No questions means everything understood or everything not understood. Yes. Yes, Paresh bhai.
Yes, Yes. Paresh. Yeah, thank you very much for the information, sharing the information. Very useful information. Yeah. Something we missed in between. So I would like to request that if we can have some kind of write-up regarding mentioning the plant name, the usage, and how to use it. Okay. Okay. That would be enable us, to keep it and use it in future whenever it is required. That's my request. Sure. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. जब हम पूछते हैं कि किसी को सवाल है तो एक साथ में 10 लोग आ जाते हैं। अभी सत्यनारायण सर ने अच्छा बोला कि सवाल 2 कंडीशन में नहीं आते हैं, चाहे सब कुछ पता है या कुछ भी पता नहीं है, तो जवाब नागेश जी है, अभी लाइन में है। यस, नागेश जी इज देयर नाउ। देयर इज वन क्वेश्चन। चलो, हमने एनकरेज किया तो सरिता रानी जी का क्वेश्चन है, उसके बाद में नागेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डिस्कस करें। यस सरिता जी, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। नमस्कार सर। यस सर, मैं पूछना चाह रही हूँ कि बॉडी के अंदर अगर वाटर रिटेंशन हो रहा हो तो उसके लिए किस प्लांट को यूज किया जा सकता है? बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन हो रहा हो सर। पुनर्नवा इज द ड्रग ऑफ चॉइस, गोखरू इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार नागेश जी। Yes, sir. Good evening, sir. We were discussing, then you were telling me yesterday over phone that value addition of the plants and extraction of the alkaloids or maybe the chemicals from the plant. But Ayurveda mein, there are 2 things specifically: Avayava Shakti, Samudaya Shakti. Correct. So Samudaya means if the whole plant is used, or I mean the whole, maybe the bark or maybe the leaf, maybe the root. If it is used intact, the actions are different. If you isolate the chemical compound, the actions may be different. So Ayurveda does not agree with the chemical extraction for each and every plant. For example, I will give you the Shatavari as one of the example. It is one of the richest source of saponic steroids. If you remove the saponins, the steroids may be vanishing. So similarly, I was giving the example of this lakucha phal, Artocarpus lakucha. People say that it is very, very acidic in taste. If you take the vitamin C or something else from this and use it in the form of pill or tablet or decoction, it may not be useful. Because it has lot of fiber in it, that fiber is very much required. If you take the fiber, then only we call it as malashodhaka effect. It is happening. If you just remove the plant alkaloid or plant chemical or vitamin C from it, I am not totally agreeing to the particular point, Vaisab. Yes. Yes, सुनीता जी। सर, मेरे को सत्यनारायण सर से ये पूछना था कि मेरी ग्रैंड डॉटर 20 इयर्स की है। जब ये 12 इयर्स के आसपास की थी तो ये बहुत अच्छी जिमनास्ट थी, गोल्ड मेडल भी मिले, सब कुछ। बट उसके बाद उसके मतलब जॉइंट्स में प्रॉब्लम हुई और मतलब डॉक्टर कहने लगे कि ये जॉइंट्स लूज हैं, जो लाखों में से किसी एक के होते हैं। तो अब जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है, उसको रेनी सीजन में और इनमें प्रॉब्लम आती है, उसके जोड़ बहुत दुखते हैं। तो कोई ऐसी है अपने आयुर्वेदा में जो आप उसको दे सकते हैं? उनका कहना है कि ये आर्थराइटिस का है। ये बहन जी, आप किधर रहने वाले हैं? मैं नागपुर में रहती हूँ। Yeah, definitely I shall help you. Yeah, you have taken down my number. हाँ जी। Find out some reasonably good Ayurveda physician in and around your place. हाँ जी, हाँ जी।
किशोर भट्ट ने हमारे को एक विनंती की इन द बिगिनिंग, व्हाट इज कायकल्प. So I will take the shloka from Charak Samhita as well as in the Ashtanga Hridaya. The shloka goes like this: Na sajjate hema pange vishram padmapatram ivambuvat. So किशोर भैया हमारा मुलाकात में श्लोक को भी डिकोड कर दिया. कैसा पद्म का पत्र का ऊपर जल का बिंदु नहीं रहता है, वैसा हमारा शरीर का ऊपर कौन सा भी विष रहा हो, वो विष निकालने के लिए हम हेम मीन्स स्वर्ण उपयोग कर सकते हैं. This was a clear instruction given in the Charak Samhita 23rd chapter, also in Ashtanga Hridaya Sutrasthan. So why I am insisting upon this means, to remove the toxins from the body, we have a very nanoparticle of aurum can be used. I mean, the gold can be used. We call it as Kayakal. Yeah. Yes. Now, next question, Aparna ji, you can ask question. नमस्ते. नमस्ते. मुझे ना बिच्छू ने काटा था एक ही जगह पे 3 बार, तो शरीर में जो और मैंने कोई दवाई नहीं ली, कुछ इंजेक्शन भी नहीं लिया है, तो वो जो जहर है बॉडी में, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? कब काटा था आपको? 3 साल पहले. तो फिर सत्यनारायण जी बताइए, अभी 3 साल में तो आपने नीलकंठ बन गए आप तो, जहर लेकर. सत्यनारायण जी बताइए इसके बारे में. पूर्णा गोरे जी नमस्कार. हाँ नमस्कार. क्यों वही जगह पे बार बार वो बिच्छू काटता है? वो yeah, we have a text in the विषय तंत्र में एक अध्याय भी है, उसको मूषिका विषय निर्हरण. आप मेरा नंबर तो नोट किया होगा, आपको मैं लगाने के लिए और वो जहर निकालने के लिए दवा का सुलभ सूत्र मैं देने के लिए तैयार हूँ. ठीक है, आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप में. आई रेफर टू द पर्टिकुलर book which was 500 years old book in Kannada. Very interestingly, the book is in Kannada, particularly 16 chapters of Vishatantra. Nowhere in the world, 560 years ago, an author from Karnataka, he is a king. He compiled a great text called Khagendra Mani Darpan. I will refer that book and I will get back to you. Thank you, sir. अपर्णा जी, हाँ. सर ने तो जवाब दिया अच्छी तरह से, लेकिन एज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चन कि आपको 1 बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, तो आपको ऐसा हिम्मत कैसे हुआ कि आपको दवाई नहीं करने से आपको अंदर से कोई ऐसा लगा कि यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग? कोई रेमेडी आपने किया? क्या है, खेत में घर है मेरा, मेरे माँ का घर ना, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में. तो आजू बाजू खेत है, तो वहां से आया होगा. बहुत सारे आम जो रहते हैं ना, पकने के लिए रखते बेड के नीचे, वहां सोए थे और रात के 11:30 बजे काटा था. तो डॉक्टर भी गांव में अवेलेबल नहीं, तो पानी लगा के, ऐसा कुछ लगा के, कत्ता लगा के वो छोड़ दिया, तो सुबह ठीक हो गया. लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बॉडी में किधर होगा. अभी इतनी गर्मी मुझे महसूस हो रही, तो बॉडी में वही जहर है क्या, घूम रहा है क्या, ऐसा लगता है. Okay. Thank you for sharing your experience. Nimisha ji, after long time, yeah. जी नमस्ते. मुझे ये पूछना है जी, बताइए. जी नमस्ते सत्यनारायण जी, मैं बात कर सकती हूँ? हाँ जरूर जी. मुझे ये पूछना है कि आजकल अमूमन स्त्रियों में एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस बहुत देखा जाता है, मतलब कि गर्भाशय की वॉल जो है वो बहुत थिक हो जाती है और फाइब्रॉइड्स होते हैं, और ज्यादातर डॉक्टर उससे यूट्रस रिमूवल का
ओपिनियन देते हैं। अभी आपने बताया नाक कैंसर, तो उसका यूज कैसे किया जाना चाहिए और ये एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस में काम कर सकता है कि नहीं? अशोक का छाल का डिकॉक्शन जी बहुत सारा लोगों को देते हैं। अशोक का बाद नागकेशर से ब्लीडिंग कम करने के लिए सुझाव मिलता है। अशोक का छाल का डिकॉक्शन और क्षीर पाक बोलते हैं, वो क्षीर पाक के वजह से आपका एंडोमेट्रियोसिस कम हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। नो नीड ऑफ गेटिंग पैनिकनेस, डेफिनेटली women can save their uterus. ओके वंडरफुल। सो चिंतन जी, ये अशोक मतलब अपना नॉर्मल आसोपाला हो कि और कोई? नहीं, देखिए आयुर्वेदा में अशोकारिष्टवती भी आती है, अशोकारिष्ट साव भी आता है लिक्विड में। सत्यनारायण जी आप मुझे करेक्ट करिएगा कि कुछ गलत है तो अशोका ट्री का जो छाल होता है उसका पाउडर लेकर, सपोज सत्यनारायण जी क्या इसको क्षीर पाक का जो विधि है उसके अंदर मिल्क के साथ में लेना है कि पानी के साथ में? भाई साहब, अशोक छाल, सराका अशोका और सराका इंडिका, where the Sita Mata was sitting under the tree. It is a wonderful tree to remove the stress of the woman. Ravana was a big physician. He knew how to tackle the Sita Mata. इसलिए वो सीता माता को वो ट्री का नीचे रखा। आपका पाउडर 1 गुण और 4 गुण पानी और 2 गुण दूध पूरा उबल के, बाद में पानी पूरा निकाल के उबल के बाद में वो क्षीर पाक तैयार हो जाता है। उसके साथ गुड़ और ये मिश्री डाल के ले सकते हैं। तो वो निहारपेट लेना होता है? Narpet. Okay. 45 days we have to use, and it is free from any untoward effects. Highly safe and used right from 13 years up to 53 years. Anyone can. Zero interventions with any other. तो इसका मतलब है कि यंग गर्ल्स जो होती है, टीनेजर्स, उसका पीरियड्स रेगुलर करने में भी ये काम करेगा? 100%. गतर शोक कहा, कैसा शोक है तो भी निकलता है। और ये लगातार कितने वक्त तक दिया जा सकता है सर? 45 days एक कोर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चिंतन जी। यस, डॉक्टर मधु अग्रवाल। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण भाई, मुझको ये पूछना था कि बच्चे जो आजकल कंप्यूटर पे ज्यादा वर्क करते हैं तो सर के बाल उड़ते हैं, जनरली सभी के देख रही हूँ मैं ये समस्या। क्या इसके लिए कोई उपाय है हर उसमें? अभी मैं इधर बैठा, बार फोन से आता रहता है, वही बाल का ही समस्या बता रहे हैं। तो इट इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम। शतावरी का आप कैसा भी इस्तेमाल करो, दीपक जी ने दिल्ली का बैठक में वही बोलते थे, एनीमिया इज एलिविएटेड, कैल्शियम रिच मिल्क शुड बी एडेड विथ शतावरी का पाउडर। वो और भृंगराज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारा किशोर भट्ट को बहुत जानकारी है भृंगराज का कैसा उगाना है। ऑफ कोर्स इन द फ्यूचर वी नीड इट not only to cater the needs of India but also across the globe. We need shiploads of shatavari as well as bringraj, particularly to tackle the address the problems of the hair fall. नहीं तो ये बाल जैसे धोते हैं तो क्या केमिकल बंद करके कोई इसी तरह के हर्ब्स को यूज करना चाहिए शैम्पू की जगह? ये तो आप खुद बता दिया। हाँ, मतलब खाने में और लगाने में दोनों में यूज कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस विल आल्सो लीड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द हेयर फॉल। ओके, उसको सही ट्रैक में लाने के लिए आप शतावरी का इस्तेमाल करना होगा। तो वो मैं अपने बेटे के लिए पूछ रही हूँ, 20 और 30 ईयर ओल्ड है। उनको भी हार्मोन्स रहता है ना जी, ठीक है। ओके, हाँ जी चिंतन भाई क्या बता रहे थे आप? यस नहीं, आपको केमिकल फ्री शैम्पू सपोज यूज करना है, ऑथेंटिकेटेड, सो प्लीज लेट अस टॉक लेटर ऑन।
मैं बता देता हूँ, नागेश भाई अच्छी तरह से सोर्स करके हमको प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, He is ठीक having है, all kind of the details which are chemical free. जी जब आपने जिक्र किया तो फिर मैंने बताया आपको, इसीलिए. बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी इसके. Yes, I think let me share नाग केसर. आप प्लांट्स देखकर मैं सर को आज 29 तारीख को दिखाना चाहता हूँ. वो थैंक यू सर. देखकर खुश होना चाहिए. फिर दूसरे क्वेश्चंस भी ले लेते हैं. Oh, fantastic. Can you see this plant? Yeah. Right? Now this is a live plant. You can see. Yeah, good. Yes. So, sir, before we take two, three questions, sir, for one plant, can you please let us know the name of this plant is Ayyappan. Yeah, it is Eupatorium. Eupatorium. And in Sanskrit is called as Alaya Karni. Eupatorium ayappana. Yes, Ayappana. Yes, It is used for the internal bleeding. Bleeding. Yeah. It is a common plant. Yes. So, what are the medicinal benefits, sir? It is a wonderful anticoagulant. Yes. So, someone told me that if we can use the juice of these crushed leaves, it will stop the bleeding immediately, and good remedy for internal bleedings also. Yeah. Okay. And there is another plants which is called as a marva, M-A-R-V-A, marva, and yeah, we can say it is a marjoram also. Marjoram is one of the aromatic plant. Yes, aromatic. But is it also having some kind of the stress releasing aroma, so that all aromatic plants have such a wonderful character to remove the stress. Yes. That's why कर्पूर धूप उसमें पूरा बॉडी का स्ट्रेस कम करने के लिए पूजा का रूम में हम रखते हैं. Yes. पुष्पा जी कहाँ चली गई? पुष्पा मैडम, please raise your hand. I will unmute you. You have to ask the question, I think. Okay, Mrinalini ji, you can unmute yourself. नमस्ते सत्यनारायण जी. नमस्ते. मैं ये पूछना चाहती हूँ, आजकल बहुत लेडीज का ये प्रॉब्लम होता है कि कंसेप्शन एक बार भी नहीं होता है, या एक बार हो के उसके बाद फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है, या मिसकैरेजेस मेरी फ्रेंड का तो 3-4 बार हो चुकी है. इन सब चीजों में भी अशोका और नागकेशर काम करेगा क्या, और कैसे इस्तेमाल करना है? इसमें सॉल्यूशन होता है क्या, स्पेशली ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स में? कौन सा जगह में रहते हैं मृणालिनी जी? राउरकेला उड़ीसा में रहती हूँ. कौन सा स्टेट? राउरकेला उड़ीसा में रहती हूँ. राउरकेला उड़ीसा. राउरकेला. आपका प्रश्न का उत्तर बहुत आसान से नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आयुर्वेदा से ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, 4 अच्छा रहे तो पेड़ उगने के लिए और बीज उगने के लिए, आपका क्रॉप अच्छा आने के लिए there will be a congenial environment. Otherwise, the siblings cannot be breeded. So major problem is either Ritu means the cycle of the individual lady or girl. Kshetra means again the internal organs, and also Ritu means the 28-day cycle, and then Kshetra is the Garbhashay. Ambu means the nutrients, and Bija means the partners, is a quality, and also the important
motility of the sperm and count of the sperm. Only these 4 things are essential for upbringing a healthy sibling in the womb. So बिना पूछे अशोका देव और सतावरी देव और कपी कच्चू देना मुश्किल है. वो कारण क्या है, वजह क्या है, वो पूछने के बाद वैद्य निर्णय कर सकता है बहन जी. पहले ऐसा नहीं था, बहुत आसान था. Yeah, past 3 decades, this has rise like anything. Yeah. When I started my medical career 45 years ago, it was not at all a problem. Just last 20-25 years, every girl with PCOS, biggest threat to the human generation. Yeah. I think we have Mr. Vaidya Suresh. Vaidya Suresh ji, yes, you want to talk something? He's also MD Ayurveda. सर नमस्ते सर. नमस्कार सर. बट सर मैं डॉक्टर सुरेश जाकोटिया सर, अपन विशाखापट्टनम में मिले थे सर. हाँ सुरेश जी कैसे क्या कुछ गलत माहिती हम तो नहीं दिया है ना आपका लोग? नहीं सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. अभी मैडम पूछ रहे थे हेयर फॉल के लिए पूछ रहे थे, तो मेरे एक्सपीरियंस में गंधक रसायन बहुत अच्छा काम करता सर. गंधक रसायन, वो गंधक रसायन बहुत अच्छा काम करता. और एक अभी फॉलोपेन ट्यूब और पीसीओडी का जो चल रहा ना सर, उसमें हम लोग अपामार्ग यूज कर रहे सर. अपामार्ग जी. और एक दूसरा अपमार पंचांग का कषाय देते सर. और एक दूसरा है पलाश के पत्ते सर. पलाश के पत्ते का डायरेक्ट अपने पास रेफरेंस भी है. पलाश के पत्ते को गाय के दूध के साथ देने से गर्भ स्थापन होता है, बल्कि अपना रेफरेंस है सर. हम लोग बहुत जनों को दिए. और रिसेंटली मेरा एक्सपीरियंस क्या है बोलते हो सर, मेरे पास 3-4 गाया हैं, तो वो लोगों को हीट नहीं हो रहा था, तो हम लोग क्या करें, वो गाय को पलाश का पत्ता दिए थे, तो 10 दिन के अंदर तीनों गायों को एक साथ हीट पे आए सर. तो इसके बारे में और अगर आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो बोलिए सर उसके बारे में. तो तीनों गाय अभी प्रेग्नेंट हुए सर हमारे, वो पलाश का पत्ता देने के बाद. Sir, you can share your number and I can take the recipes of these also for our गौ पालक. उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि जो लोग गौ पालक है उनको गाय के लिए ये उपयोग करें. और आपने अपा मार्ग का भी जो प्रयोग बताया फॉर दिस वुमन के लिए, तो उसका भी प्रयोग कैसे करना है वो आप अभी बता सकते हो, तो यू कैन लेटेस्ट शेयर दिस. अपा मार्ग का पंचांग लेना सब, पंचांग लेना, पंचांग का पाउडर बना लेना. सो डाली, उसकी डाली, पत्ते, मूल और फूल और पत्ते सबको. ओके, सब लेना, पंचांग का पाउडर लेना सब. वो सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ देना, बस इतना ही. तो वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत अच्छा काम करता है सर. इवन पीसीओडी में भी हम लोग दे रहे हैं, उसके साथ कांचनार गुकुल है या कुबेराक्ष वटी देते हैं, उससे भी बहुत अच्छा काम करता है पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से. मेन हमारा ड्रग है अपामार. और ये जो हाँ जी, यस सर. और एक साथ में अभी अपने महाराष्ट्र में एक बहुत पॉपुलर है, धमासा बोलते सर, धमासा. हाँ सब, वो भी बहुत अच्छा काम करता है सर. धमासा भी पूरे हार्मोनल इम्बैलेंस में, इवन फाइब्रॉइड, यूट्रस के फाइब्रॉइड में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है सर धमासा. वो भी फिर कांचनार गुकुल के साथ देते हैं हम लोग. अच्छा काम कर रहे सर. राइट सर. सर ये पत्ते जो खिलाने का जो है गाय को, वो कितने पत्ते खिलाना, क्या कितने कुछ है? देखिए हम लोग क्या करें, पत्ते लाके सुखा लिए, सुखा के एक क्या बोलते हैं अपना अर्धांजलि प्रमाण समझिए, अपना हाथ में जितना आता है ना अर्धांजलि प्रमाण, उतना जो गाय को जो चारा दिए ना, वो चारे में मिला के दे दिए सर. तो एक 10 दिन दिए हम लोग. तो तीनों गायों साइमल्टेनियसली हीट पे आए सर. तो उसको क्रश करके देना है सूखे हुए पत्ते को कि हरे पत्ते? नहीं, हरे पत्ते गाय नहीं खाती सर. हरे पत्ते नहीं खाती गाय, बिल्कुल नहीं खाती. वो भी ट्राई करा, फ्रेश लाके दिया, नहीं खाई गाय. तो उसको हम लोग सुखा दिए, सुखा के उसको मोटा मोटा पाउडर बना देना, और जो गाय को दाना दिला देना, दाने के साथ दे देना सब उसको ऐसा. ओके, उसके साथ. तो ये अगर अपने पास आयुर्वेदिक में ह्यूमन के लिए रेफरेंस है, तो हम लोग पशुओं में ट्राई करें.
उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सर। और अपने पास क्या बोला, पुंसवाना संस्कार में भी पलाश के पत्तों का रेफरेंस है। पुंसवन संस्कार में भी है, वो भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। वंडरफुल, वंडरफुल, सो नाइस ऑफ यू सर। थैंक यू सर। यस पुष्पा जी। Yeah, Namaskar, Sathyanarayana ji. One is nowadays all of us have to go to a dentist. तो डेंटिस्ट से बचने के लिए या जो बचा कुचा दांत है उसको संभाल के रखने के लिए कैन यू सजेस्ट समथिंग? दैट इज वन फर्स्ट क्वेश्चन. आई हैव एटलीस्ट सम 7 रूट कैनाल्स डन इन माय माउथ. एंड और एक है कि घुटने का आई हैव इश्यूज. आई हैव पेन इन माय नीज फॉर क्वाइट सम टाइम. तो उसका 2 साल से तो ज्यादा ही है. Because I've been having some vegetable juice and some I told yesterday, what was that? Vermiculite treatment, but still pain is there. So can you suggest something, Sathyanarayana ji? I mean, knee pain. I've been asked to. Pardon me? कौन सा जगह में रहते हैं? Where are you staying? I'm staying in Bangalore now. I see. बहन जी, आपका डेंटल प्रॉब्लम के लिए आप नारियल का तेल में गार्गलिंग करना होगा Okay. लगातार, और नींबू ड्राई करके, नींबू का छिलका रहता है ना, द आउटर पील ऑफ द नींबू, Yes. उसके साथ नमक डाल के पाउडर करके रखिए. रात के टाइम में उसमें आप दांतुन करना होगा. Okay, sir. सजेशंस आई कैन गिव. घुटने की दर्द के लिए अभी घर का इलाज बहुत सादा तरीका का आप ले सकते हैं. 100 ग्राम्स मेथी. Yes. 50 ग्राम जीरा. Okay. और 5 ग्राम गोल मिरी. That is gum, no? नो, मिर्ची गोल Okay. मिर्ची. पेपर. Black pepper? Yeah. Okay. So 100 grams मेथी, 100 grams. 50 ग्राम जीरा, 5 ग्राम pepper, black Okay. pepper. So 3, you just fry it well over the pan and then powder it and put it to milk and drink. Boiling and then taken orally. How often? 1 चम्मच पाउडर, 1 कप दूध और थोड़ा सा पानी डाल के उबल के पूरा सब पी लेने का. दिन में 1. On empty stomach, sir? Yeah, preferably in the evening hours. भात काल बोलते हैं, 6 बजे evening. Thank you so much, sir. नमस्कार. Very happy. Thank you so much. सुखजीत जी. सुखजीत जी, आप है यहाँ पर? आपने हैंड रेज किया था. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. यस. हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि डायबिटीज जैसे बहुत कॉमन है, तो उसके लिए आयुर्वेद में कुछ है कि जो पेशेंट खा सकते हैं? डायबिटीज के बारे में पूछ रहे हैं जी. वही हम पहले एक चीज का नाम बताया, विजय सार. नहीं तो आपको उसका आसनादिगण कषाय, ये आप दुकान में मिलता है और आराम से ले सकते हैं. बाद में शिलाजीत या उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. शिलाजीत का पाउडर पानी के साथ? पाउडर भी आता है, उसका सेमी सॉलिड लिक्विड वो भी आता है. जी. और एक जो छोटे बच्चे जो खाना नहीं खाते, तो उनको उनकी भूख के लिए आपको पिपली का एक पाउडर मिलता है, गोली भी मिलता है. बहुत छोटा रहे तो मधु के साथ पिपली का चूर्ण
चिमटी में 2-3 बार दे सकते हैं. थोड़ा up to 5 years, above 3 years, you can give 1 tablet in the morning and 1 tablet in the evening. Pipli ka tablet. पिपली का टैबलेट. Yeah. धन्यवाद. Namaskar. Yes, Nilima ji. नमस्कार डॉक्टर सत्यनारायण. नमस्ते नमस्ते. सर मुझे है ना लोअर बैक पेन है. एक्चुअली 10 साल पहले एक्चुअली सीढ़ी से 2 बार गिर गई थी. वैसे तो देयर इज नो डैमेज, स्कैन वगैरह किया, नो वर्टिब्रे प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं है, बट दे से द मसल्स आर वीक वहां पे. उसके लिए कुछ है क्या? मतलब दवाई ट्रैक्शन किया नहीं है, लेकिन तेल का मालिश किया है. आई हैव बीन टू वैद्य केरला में 10-15 दिन का मालिश वगैरह ट्रीटमेंट किया है. आफ्टर दैट आई यूज्ड टू टेक सम मेडिसिन आयुर्वेदिक का, लेकिन अभी मैंने सब स्टॉप कर दिया. आई डोंट वांट टू टेक एनी मेडिसिन. और कुछ मतलब योगा भी ट्राई किया था. आई बीन डूइंग योगा फॉर 2 years, सूर्य नमस्कार वगैरह, एंड दैट्स इट. बट स्टिल थोड़ा सा वो पेन रहता है, काइंड ऑफ. आधे घंटे के बाद अगर खड़ी रहती हूँ ना, आफ्टर हाफ एन आई फील लिटिल वीक. So using the bed, it should not be too soft. So Okay. you should lie down in the hard surface, Okay. preferably over the woolen blanket. Okay. The next thing is, as you have tried already about the तेल मालिश. आयुर्वेद में या मालिश के लिए ही ज्यादा हम प्रेफरेंस देते हैं. तेल मालिश को बार बार करना ही होगा. बाद में नहाना. ओके. महानारायण तेल, दानवंतर तेल दोनों भी मिला के वारम करके मालिश करना. ओके. रोज करना. 20 मिनट पहले नहाने से. ओके. ओके. और वो मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ होगा सर? बिकॉज दे से कि मसल शायद बहुत कम है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. बहन जी, अभी मैंने एक सादा का तरीका बताया आपको. मेथी का. मेथी और जीरा और पेपर, ब्लैक पेपर. ये प्लीज ट्राई. ओके, आई विल डू दैट. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. Yes, now Mallikarjun Kori. He also came after so many time. Yeah. Yes, sir. Good afternoon, sir. I am Mallikarjun Kori from Kenya. Yes. Sir, I want to know the solution for the constipation, sir. I had gone through barium test in 2005. Since then, before that, I was okay. But after that, somewhere I read, sir, barium test induced constipation. So I have some constipation since then, sir. So Ayurveda says continuous use of buttermilk is the best one. Okay, sir. Yeah, first thing is buttermilk, and it may not be sufficient. You can use isomgol. Okay. इसबगोल का पाउडर मिलता है. Okay, sir. बराबर नहीं हुआ तो आपको मल्लिकार्जुन जी का एरंडी का तेल, castor oil. Okay. Yeah. You can use it along with the milk, along with chapatis. Okay. What else, sir? Regular food and lifestyle should be proper. Exercises. If you are doing a sedentary job, you need minimum walking of 1 or 2 kilometers a day. No, I am a farmer, sir. I am doing farming. I do walk, sir, regularly. I am not a sedentary job. Then your hardship should be, it should be minimized,
and use enough buttermilk. Okay, okay, sir. But that buttermilk should be made with Bellona, no, sir? Regularly use it morning, noon, evening. Okay, okay, sir. But you don't have any other diseases or Nothing, underlying- nothing. No, not at all, sir. Yeah, you look very healthy. Yes, sir. Yes, sir. I even got your book, sir. Actually, all your books I got, sir, during the Corona time. Oh, I see. Thank you. Thank you. Okay, sir. Thank you so much, sir. You can also say Sathyanarayan Garu in your language. No, Right. mine is Kannada and sir language is Kannada. Acha, I can say okay. Kannada, sir. Acha. Fine. Thank you. We have little bit time, so I request the rest of the members to ask very quickly अपना specific questions पूछे. रेणु जी मुरक्का. हेलो Yes. जी नमस्ते सर. नमस्ते. मैं जानना चाहती हूँ सोराइसिस के लिए भी कोई क्योर है क्या हर्बल मेडिसिन्स में? क्या? सोराइसिस स्किन प्रॉब्लम के लिए. Yeah, it is a psychosomatic problem. It needs an elaborate treatment, Renu ji. Okay. Can I meet you, sir, in Bangalore? Yeah, but I'm living in the village. Hardly come to Bangalore once in a month for 1 or 2 days and rush back to village. Anyhow, good luck. I'll talk to you, sir. Sir, राधिका जी. नमस्ते सर. मैं आपको पूछना चाहती हूँ एज रिलेटेड हियरिंग पे कोई क्योर है क्या आयुर्वेद में? मेरे फादर को अभी थोड़ा एज रिलेटेड हियरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, उसके ऊपर कोई क्योर है? If it is a genetic problem, it is difficult to tackle. It's not genetic. Of late he has started having problems. Even after having hearing aid, he is not able to hear properly. No? So I thought if there is any cure. So How young you are? For my father, I'm asking. Not for me. How old is he? He is 80. You allow it to nature. Nothing could be done. Okay, sir. There is no medicine as such which will improve his hearing. We suggest ear drops. Okay. Bilwa tail. Warm dropping of the ear drops. Bilwa ka tail milta hai. Warm drops. Both the ears. Achha. Okay, sir. Thank you, sir. Namaskar. Namaskar. Yes, Paresh bhai. Is there any remedy for the sciatica pain? It's due to the postural imbalances or weight or Vatka aggravation due to the piles sometimes. Okay. So इंगवाष्टक चूर्ण को हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. Okay. और तेल मालिश को भी ज्यादा इंसिस्ट करते हैं. Okay. ठंडी हवा है. शॉल ओढ़ लेना. इंगवाष्टक. बाद में I already told regarding the cot and then warm Woolen blanket. Yes. Yeah. Yes. And also use that methi jeera. Okay. Got it.
That is with milk. I mean, after boiling. I mean, in the at 6 o'clock. Yes, you said. Yeah. Okay, I got it, sir. Thank you. Thank you very much. Sathyanarayan ji, if you permit, then we can continue for another 5-10 minutes, sir. Yeah. What do you suggest? If the questions are many, can definitely. Yeah, here is an oil. Is it seen? Can you see this oil? Sir, you need to start your video, sir. You can start your video. Okay. नागेश जी, मैं अभी आपसे बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं। मैं आपके लिए काफी सारे क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने समुद्र की बातचीत नहीं की है और बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर बातचीत की है। अपने को डिका माली के ऊपर इनको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और कुटकी के ऊपर बात करना पड़ेगा अपने को इनको, क्योंकि इनको जनरल हेल्थ से ये क्रॉनिक हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, हेल्थ इश्यू की तरफ जा रहे हैं। तो हमको पहले उस चीज के पे जाना पड़ेगा, गोरख मुंडी की तरफ बात करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जो आयुर्वेदिक में जनरल फॉर्मुलेशन में लेके भी अपन इनको क्योर कर सकते हैं। और आज आपने क्या था कि हार्ट के ऊपर काफी फोकस किया, तो मैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब और नेक के ऊपर के लिए अपन इसको फॉर्मुलेट करके अगर इसको अपन एक जनरल एक प्रिपरेशन दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, हम नासा ही शिरसोद्वारम। करेक्ट। वो आपको अपर लिम्ब का हम मे बी द पेन इन द शोल्डर, पेन इन द आर्म्स, पेन इन द नेक, everything can be addressed with very little effort, particularly अनुतैलनस्य। और दूसरा एक तरीका है, हमारा बहन जी बहुत सारा बैठे हैं इधर। अभी एक बहन जी ने पूछा 80 साल का हियरिंग प्रॉब्लम के लिए भी हमारा एक सादा का तरीका है, वो हम करावली का जनपद शैली से हम उसको उद्धरण करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको यमक तैल बोलते हैं, यमक तैल अभ्यंग। करेक्ट। Yamaka means twin unctuous substances. One is ghee and another is coconut oil. One is ghee or another is castor oil. One is ghee and another is तिल तैल। इसको यमक बोलते हैं। वो यमक तेल को आप गरम करके सिर का ऊपर पूरा सा पूरा मालिश करना, बाद में ज्यादा वक्त नहीं ठहरना, 5 मिनट में नहाना। इससे आपका हियरिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव हो जाता है। हेड एंड नेक प्रॉब्लम्स कैन बी डेफिनेटली एड्रेस्ड। आई यूज्ड इट इन n number of, I given in many TV shows also. People have taken wonderful results from it. Correct. And then lower limbs you are telling. Yes. So whether it is Kritrasi Bhat, our friend was asking, Naresh Bhai was asking, maybe it's about sciatic pain. So all these things could be addressed with simple application of Snehan, maybe any oil application, as well as Ingvashtak Churan, Chandraprabhavati, Yogaraj Google. All such things can be definitely used as one of the prime drugs of choice. करेक्ट। सर, कुटकी और डिका माली के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए अपने को। कुटकी का बारे में बहुत, क्योंकि ये बहुत सारा है, मल्टी टैलेंटेड ड्रग्स है सर ये। या सोरियासिस से जॉन्डिस तक कुटकी को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट नागेश भाई, एक विचार है कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है, मिलना मुश्किल है। हम ये काम करते हैं, अशोका कल लगा लो, विजय साल लगवा लो, गोरखमुंडी बीज लगवा लो तो ही बचेगा। बाकी तो पेंडुला आसोपालव की छाल का काढ़ा मिल रहा है और 50% नाक के से डुप्लीकेट मिल रहा है।
हमारे ऋषि कृषि परिवार में हर 10 किलोमीटर में सब पेड़ पौधा होना चाहिए। ये बिच्छू वालों को भी मैं बहन को बोलता हूँ निर्मली लगा दो। ये अशोका वाले ने बोला 2 साल में अशोका बढ़िया हो जाता है। अशोकाष्टमी का त्योहार आता है, अशोक का फूल से वो त्योहार रखा जाता है बहनों के लिए। और रामायण में भी उनकी चौपाई है, सारा का इंडिकेटर। उसमें तो किशोर भाई अपन एक काम करेंगे, अभी भट्ट नारायण जी के साथ में अपन एक बार एक प्रोटोकॉल बनाएंगे और अपने जितने भी ऋषि परिवार के जो लोग हैं उनको 10-10, 15-15 पौधों का अपन ऐसा उनको एक म्यूजियम बनाने की बात कर देंगे उसमें अपने प्रैक्टिकल में, और उसके साथ में उनको एक रिकवरी की बातचीत कर देंगे। जैसे बहुत सारे लोगों की मैं देखा था कि समस्याएं जो ऐसी है कि उनकी कोई एज रिलेटेड है और कुछ चीजों के ऊपर उन्होंने बेसिक ध्यान नहीं दिया है, उसके कारण भी डेवलपमेंट आया है। सोराइसिस का प्रॉब्लम भी बहुत आसानी से हल हो जाता है। और जो केनिया से जो पूछ रहे थे उनका बाउल फंक्शन को भी उनको देखना पड़ेगा कॉन्स्टिपेशन के लिए। और मैं ये कहता हूँ कि अजवाइन को भी अगर आप उसमें जोड़ेंगे तो वो भी एक रेमेडियल पोर्शन के ऊपर जा सकता है। और भट्ट साहब मेरी बात से शायद सहमत होंगे इस बात को लेके, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीजें वैसे अपने पास में भट्ट साहब से जब अपन डिटेलिंग करेंगे इस बात को लेके, क्योंकि समय का बहुत अभाव है और प्रश्नों का अंबार बढ़ता चला जाएगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि एक बार अपन लोग एक कॉमन उनके साथ प्रोटोकॉल बनवा लें और अपने सारे पार्टिसिपेंट को अपने जो कन्वोकेशन के पहले उनको सारी चीज दे दें। जैसे नींद की प्रॉब्लम की बात कर सकते हैं अपन, ओरल हेल्थ की प्रॉब्लम को बात कर सकते हैं, पेन के बारे में उन्होंने बता ही दिया, हार्ट के बारे में बता दिया, स्टोमक के बारे में बताया, बोन्स के बारे में बताया, मसल्स के बारे में जहां तक सवाल उठता है उसके बारे में अपन को एक बार और प्रोटोकॉल लेना चाहिए ताकि पूरी चीजें एकदम से पूरा कवर हो जाए सारी चीजों को लेके। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि उनको एक बार हमको वापस से इन चीजों को प्रश्नों को अपन सारे ले लें एक बार सबसे, और फिर भट्ट साहब को दे दें और फिर उससे अपन प्रोटोकॉल बना के एक टेबल बना के दे दें सबको, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों सर? हाँ जरूर। हाँ, ताकि वो क्या होता है कि पूरा प्रश्न का यस मैं बताता हूँ, ये इसको हम कोलोक्वियली कॉल इट एज विश्वामित्र कपाल स्नेह। करेक्ट। क्या है वो? आपका नारियल है ना, नारियल का छिलका से बनाया हुआ ऑयल है ये। बिल्कुल। यूज्ड इन सोरियासिस और यूज्ड इन एनी लॉन्ग टर्म eczema like things, we can use it. And किशोर भाई को ये इससे नारियल का ऊपर का छिलका है ना, उससे बनाया हुआ मेन्यूर है। ये पेड़ पौधों को उगाने के लिए बहुत अच्छा मेन्यूर भी है। ऐसा सारा तरीका कर्नाटक में अभी शुरू हुआ है। ये तेल भी बहुत आसानी तरीका से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट, मतलब ऑयल भी उसको बहुत सारी बार प्रिवेंट करता है। उसके साथ मेडिसिन का अगर अपन ने यूज कर लिया तो वो एकदम से क्योर कर लेगा। बहुत अच्छी बात बताया आपने, क्योंकि ऑयल मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है वहां पर और जो मेडिसिन है वो क्योर करता है, तो दोनों का सप्लीमेंट अरेंजमेंट हो जाता है। तो बहुत अच्छा वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेगा और बहुत जल्दी सोराइसिस को वो कवर कर देगा। इसमें विदारा को भी अपन ले सकते हैं, वैसे बहुत अच्छी चीज है उसमें भी। तो ये सारी चीजें आपसे बहुत सारी चीजें, एक्चुअली क्या होता है कि सर ये 1.5 घंटे 2 घंटे का सेशन नहीं है ये, आपके साथ तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो 1.5 घंटे 2 घंटे में समेटना न तो आपके बस की बात है और न हमको उसको सुनने में मजा आता है। ये तो थोड़ा कंटिन्यूस प्रैक्टिस की बात है। और मैं सबसे पार्टिसिपेंट को पहले ये भी कहना चाहता हूँ कि भट्ट साहब अच्छे बॉटनिस्ट तो है ही हैं, साथ में बहुत अच्छे पेरेंट्स भी हैं। वो उनके जो बच्चों को जो अवार्ड मिला सर उसके बारे में बताएं, ताकि जो मैडम पूछे थे बच्चों को कैसे इनकरेज करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि उस ओशनोग्राफी में किस तरीके का अपने कंट्री का नाम रोशन कर रहा है वो बताएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद धन्यवाद जी बताएं सर, उसके बच्चे के बारे में थोड़ा बताएं, उसको अवार्ड मिला जो। वो अवार्ड को पीछे हमारा वाइफ बैठी है। बताइए, बुलाइए उनको, बुलाइए उनको, बुला लीजिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अपने परिवार के ही हैं। मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि ये हमारा जो ऋषि कृषि परिवार है और इसमें हम लोग सब लोगों को साथ में मिलकर सेलिब्रेट भी करते हैं और सब लोग साथ में मिलकर अपने नॉलेज को भी एक्सचेंज करते हैं। तो आप उनको भी बुलाइए और ये सारी चीज को साझा करिए हमारे सबके साथ में, क्योंकि ये बात आधी रह जाएगी अगर सबको नहीं बताया हमने। तो आप दोनों को बधाई हो बहुत बहुत
क्योंकि उसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, हमारी कंट्री के लिए फेदर है। मैं ये सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे जो बच्चे जो हैं आने वाले, जो हमारे ऋषि कृषि परिवार के हैं, वो कैसे इनकरेज हो। आप दोनों का जो चेहरा है वो खिलता हुआ यही बता रहा है कि बच्चों के साथ में कैसे मेहनत की जाती है और बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, और फिर खुद भी कैसे गांव में छोटे से जाके पूरी पीसफुल लाइफ को जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए भाई साहब, ये तो हम बहुत पुअर फैमिली से हम पैदा हुए हैं। इसका फादर एक टीचर था, मेरा फादर एक मिल्क वेंडिंग मैन था। करेक्ट। इतना गरीब फैमिली से हम इतना तक पहुंचे हैं, और बच्चों के लिए पूरा माँ का देखभाल ही करती थी, और ब्राह्मी का अक्सर हम यूज करते थे। और मैथमेटिक्स में मैं तो बहुत पुअर हूँ, वो तो एकदम अच्छा उसको फाउंडेशन मिला। मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ साइंस, सो दैट्स व्हाई ही वाज अ वेरी ब्राइट स्कॉलर बन गया, टॉपर बन गया कॉलेज में भी। बाद में थोड़ा समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी काम करता था। बाद में उनको जापान, सिंगापुर ऐसा जगह में जाके पढ़ने के लिए भी मौका मिला। ऐसा वो बड़ा बेटा ऐसा हो गया, और छोटा वाला भी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा है। उनका भी बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वो काम कर रहा है। वही डोमेन में बहुत आगे चल को उन्हें बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया है। उसको जो अवार्ड मिला है उसके बारे में भी बताएं सर थोड़ा सा, उसको किस तरीके का अवार्ड है वो अवार्ड का बारे में, वो इन हिज डोमेन पर्टिकुलरली ओशनोग्राफी में नीचे पानी में जाके उधर का शोध करने के लिए रोबोट्स बनाता है। वो रोबोटिक्स में इसका जान पहचान बहुत ये मेहनत से किया वो। उसका जानकारी internationally he was presenting many papers, and their oceanography association has awarded him just 40 hours ago in Mississippi, America. बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत लकी हैं कि इतनी जल्दी उस अवार्ड का टेस्ट हम लोगों ने आपसे ले लिया, क्योंकि हमारी ये कंट्री के लिए प्राउड विषय है ये। क्योंकि आने वाले टाइम में मतलब जैसे अब मतलब थल और वायु का ऊपर तो काफी काम हो चुका है, ओशनोग्राफी के ऊपर और कवरेज इसका बहुत सारा लेना बाकी है, और रोबोटिक्स के ऊपर अगर वो काम कर रहा है तो जैसा अपने लिथोस्फीयर के ऊपर बातचीत होती है, ऐसे अंडर सी भी बहुत सारी चीजों के ऊपर अभी एक्सप्लोरेशन चल रहा है और उनके ऊपर बहुत सारा काम होना बाकी है। अंडर सी माइनिंग के ऊपर भी बातचीत हो रहा है, जो इकोनॉमिकल कंट्री के ऊपर बहुत सारी चीजें अभी आना बाकी है। अगर हमारी कंट्री का कोई व्यक्ति अगर ऐसा काम कर रहा है तो हमारी कंट्री के लिए वो फेदर है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई है। और मैं आज के सेशन के लिए बहुत आपने मतलब कहना चाहिए कि आज आपने एक सत्यनारायण भट्ट साहब के नाम से क्लिनिक शुरू किया आपने यहाँ पर सबके लिए, जो कि सब लोगों ने आपके साथ में बातचीत किया और उनको आपने हाथों हाथ रेमेडिया दिए है, और ये सबका आज का हमारे लिए असेट भी है और हम इसको जारी रखेंगे। आप मेरे का विषय जैसे किशोर भाई ने कहा कि आप हमारे इस पूरे सब्जेक्ट के लिए मेंटर होंगे, तो हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं आपका नंबर हम उनको शेयर करेंगे। कभी आपसे बात करें तो आप उनको अच्छे से जिस तरह से जिस प्यार से आपने अभी जवाब दिया है उसी तरह से उनको जवाब दें, और अगर कोई डिफिकल्टी है तो उनको गांव में बुला के 2-4 दिन रख भी लीजिए, तो आपकी आदर सत्कार के लिए वो मतलब उनको मजा आएगा। क्योंकि गाँव की हवा से ही बहुत जल्दी ठीक होता है और जो डॉक्टर की बात से ही बहुत जल्दी ठीक होता है। तो आपके पास दोनों चीजें हैं, और आपकी हंसी जो बता रही है वो बहुत ही अच्छे से इस चीज को कर पाएगी, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भट्ट साहब आपको। भट्ट साहब को थोड़ा फोकस कर दीजिए। वक्त हमारे साथ गुजरने के लिए भी हम बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बड़ा टीम बना दिया हमारा। धन्यवाद महाशय। किशोर भट्ट का पूरा कीर्ति चले जाता है। हम आपके सब हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ जितने पार्टिसिपेंट हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ हमारा परिवार है ये हमारा, और मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ मैं हम कि ये जितने भी पार्टिसिपेंट हैं बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे से
भट्ट साहब हमारे साथ में रह के पूरा 6 महीना बिताने आ रहा है ये, और इन्होंने एक जने ने इतना मतलब इतने आउट ऑफ कंट्री से भी है, और उन्होंने इतने डिसिप्लिन से, इतने प्रॉपर तरीके से और इतना रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को कोऑपरेट किया है, ऐसा देखना सबके लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये सब आपके साथ में आज हमारे मुखातिब थे, ये एक बहुत बड़ा असेट है हमारे लिए। उनको ही बुला लीजिए आप। फ्रेंड मिस्टर मृत्युंजय रेड्डी who has उनको बुलाइए, facilitated me to sit उनको ही along with बुलाइए, him in his house. उनको यस, बहुत भट्ट साहब के साथ में आपको बैठने को मिल रहा है, और हम लोग यहाँ दूर बैठे हुए हमको अच्छा नहीं लग रहा है। He is a हम भी very चाहते हैं experienced farmer having a big acreage in this village, also ऊपर घाट में भी, अंदर घाट में भी। करेक्ट, Big farmer, at the same time he is a big engineer who has potential capacity to, yeah, maybe under him how many people are working? Now we are about 500 people. Yeah, under our Mૃత్యుంజయ Reddy, he says that only 500 people are working. Very good. So he is also one of the wonderful personality who has helped me to come in front of you, sir. Very nice to meeting, and we are very glad to see you here on that moment, and we are very glad to heard about we are dealing with the 500 people. This is the corporate agriculture system, I think. No, when it comes to agriculture, I'm learning from Dr. Saab on how to manage the endemic species of the Western Ghats. So rather than going with the cash crops, we are focusing on medicinal plants. That's where right, very good. भट्ट साहब के साथ में तो हमको जो दूसरा वाला हिमालय है उसके बारे में भी बातचीत करना बाकी है अभी हाल, क्योंकि वो स्पिरिचुअल सिस्टम पे भी है, मेडिसिनल सिस्टम पे भी है, और हमारे कल्चरल सिस्टम के ऊपर भी है। तो उसकी टोपोग्राफी के बारे में, उसके कंटूरिंग के बारे में, उसके प्लांटेशन के बारे में बहुत सारी बातें भट्ट साहब से करना बाकी रहता है, क्योंकि अब समय ऐसा है कि हम उनके साथ बात करें तो 2 सेशन तो उसी में निकल जाएंगे। तो भट्ट साहब आपको बहुत बहुत बधाई, और एक सेशन हमारा मिस हो गया। अगर हम 2 सेशन भी कर सकते थे उसमें, लेकिन बहुत दुख की बात है कि वो सेशन हमारा छूट गया वो, और आज भट्ट साहब ने उसकी कसर पूरी कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Because of Rishi only it could happen. Thank you, sir. Correct. Thank you very much. So kind of you. Well done. So thank you so much. सत्यनारायण भाट जी, 2-3 लोगों के जो भी क्वेश्चंस कुछ बाकी है तो फिर मैं आपको आई विल सेंड यू द व्हाट्सएप, कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो। यस सर। ओके सर, ओके सर जी प्रणाम। हाँ नमस्कार भैया। We can stop recording now. Thank you, sir. Thank you once again. Thank you. Good night. Good night. Good night, sir.